Oh, sit down, guys. First of all, the confusion for the lectures. Yes. And second, my lecture 2 hours, you are going to get any headache? No. Then what do you? And they. Sir, ये unit का पूरा program थोड़ा hard लग रहा है. So क्या? बड़ा chapter. Sir, so क्या हो गया? Sir, इसी का. Hey, listen. अगर तो जैसे स्टेजेस बढ़ते जा रहा अगर इजी होता गया तो 10th में केजी का पोर्शन नहीं पड़ेगा. हार्ड होगा तो मुझे बता मैं को हेल्प यू आउट है ना. In fact, now the portions are going to become easier because 10th standard portions are going to. I don't think your side any changes are done, but for CBSE there is a lot of changes. They are really देखना बेटा government क्या कर रहा है. So we are with a new chapter, old chapter, existing chapter. Which one? Not simple. मैं absent था पिछले 2 lecture. तो फिर आज तक PPX का लगता है. क्यों absent है? Where is this person? What's her name? घूमने लाया था. हाँ? मेडिकल. मेरा नहीं बोल रहा उसका बोल रहा है. मेरा. उसको तो उसने बताया तुझे. हाँ. सबको भी बता रही थी ना उस दिन लेट आई थी तब. क्या? इस टाइम का. अभी तो फ्राइडे को बोली. वो एक दो बस. हाँ. कोई देर के लेक्चर. Composition and the structure of the atmosphere. क्या पता नहीं. ये क्या कर रहे थे? We are a little bit behind. I have completed this chapter in Sanpada branch. Composition and structure. तो यही करते हैं. ना okay. We are a little bit ahead. ये हो गया हाइड्रोस्फीयर हो गया. हाइड्रोस्फीयर हो गया. ये कब हो गया? आप सो रहे थे मेरे को. पूरा शिव चैप्टर हो गया शिव. सब हो गया. वो उसको दिखा रहा था ना उन्होंने किया. Okay. Put the settings. क्वेश्चन पूछ रहे थे ना. But for the explanation, let's start with the introduction. Is he coming? Was जिंदगी में पेली की तरह. Just guys, look here for a moment. Let me just rush the whole chapter for you. The chapters are to be very interesting, but information has to be critical or to the point was you. And when we say atmosphere, what is the first picture that comes to your mind? Blanket of air that surrounds the earth. The more we are closer to the ground, the more is the density. The more it is away from the ground, the lighter is the density. So we start with the structure. Before we start with structure, do you understand the importance of atmosphere? Yes. What importance? It traps the and the gas or the sun rays do not. No, वो तो एक layer to बोल. It's to understand without the blanket of air, your and my survival becomes zero. Although it has different gases in different proportion, but then also we need to have an atmosphere of its own. You move out of the earth into the space, next into the planet. Do any planet has atmosphere? Sure. That is why human survival or plant survival is not possible. There are people who say, sir, what is ionosphere? What is stratosphere? What is mesosphere? And what is exosphere? Exosphere is that where if I start from the top, it's almost the space. Why I am using the word almost the space? Because once you move out of exosphere, the earth comes to an end. The word is exhaust.
Mesosphere, it is in between exosphere and stratosphere. And we have this ionosphere one part when normally the satellite launching or the signal waves and other things takes place. Why? The word is ion. You know what is ion? Which helps in the easy movement of what? The radio waves signals. Then we come to about stratosphere, it is just about troposphere. So everywhere we have a line which divides the stratosphere and troposphere, we call this as tropopause. So in stratosphere and mesosphere we say stratopause. What does mean? There is a gap between successive layers of the atmosphere. How do I know it is 0 to 8 kilometer or 8 to 18 kilometer or 18 to 50 and 50 to 100 and above 400? The layer from where the behavior of the movement changes, the geographers try to say this might be that. But is it exactly 18 kilometer रहेगा या 20? Maybe. Because ये पूरा एरी तो है. Is it land fix? हाँ सर इतना तक ही है उसके आगे नहीं है. But then how do I understand? It is the behavior of the waves. It is the behavior of the movement of the air over. So some are highly important for you and me. The others are also, but it depends on the distance from the earth to that of the atmosphere. So who might have really understood atmosphere? Who really understand various layers of the atmosphere? So let us write first the meaning. Meaning, the blanket of air, surrounding the earth structure, blanket of air surrounding the earth structure is known as atmosphere. Blanket of air surrounding the earth structure is known as atmosphere. Full stop. One more line, leave that line. It comprises of following main spheres. It comprises of following main spheres. One is right troposphere, two stratosphere, three mesosphere, four ionosphere and exosphere, thermosphere, and five exosphere. Okay, so now quickly draw the diagram. I will also exhibit the diagram as it is, and then we can move one after the other. Put the heading structure of the atmosphere. Scanning what's not a आपने ये तो उम्र है हमारा ये कितना हाँ पकड़ लो Come on, put the heading as structure of the atmosphere. Either I share the diagram
Okay. its atmosphere, which is the body of air or gases that protects the planet and enables life. The three major constituents are nitrogen, oxygen, and argon. Earth's atmosphere has 5 distinct layers. Let's look at each, from closest to farthest from the Earth. Troposphere. The layer of the atmosphere closest to the Earth is the troposphere. It begins at the surface of the atmosphere. Stratosphere but still remains. Air is especially thin. The stratosphere In fact, very much a also has the molecule. same. Yes. Exosphere is a called the critical altitude supply. Atmospheric नहीं ना, तो ये जरा अच्छी दिखेगा ना. चलो, अभी बना. Troposphere 0 to 12 किलोमीटर. हाँ चलेगा. रेक्टेंगल ही बनाओ. ये तो आपको दिखाने के लिए यार. जैसा मैंने बनाया, हम लोग तो हमारा स्केल में ऐसे करते हैं. As for your level, it has come in a क्या बोलते हैं? Old wine and new bottle. You understand? Yes. अरे यार, इतना बड़ा हो गया. चलेगा मेरा भाई. नहीं. मतलब उसका मतलब क्या है? हाँ सर, कभी-कभी टेंशन आता है. नहीं. नहीं ले सकते तो क्यों ले सकते? तो इसको ऐसा भी बना सकते हैं और ये लेयर ऐसा भी बना सकते हैं. नॉट नेसेसरी. क्यों टेंशन ले रहे हैं? देखो मैंने वैसे ही बनाया, फिर आई थॉट
And I start explaining. Slide. Yes. When you look at this diagram, the first thing that we are going to understand, and just stop drawing, it will take more time. We are having troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, and exosphere. It all varies with the distance from the Earth. So it is 12 kilometers, somewhere you might find 18 kilometers also, है ना, 8 to 18, क्योंकि troposphere और stratosphere के बीच में एक आता है जो मैंने purpose से draw करके रखा है, that is tropopause. And then normally our ozone layer is between stratosphere and troposphere. Are you seeing this layer? This is that ozone. And when we start about stratosphere, it is from maybe like 12 to 20 kilometers, and mesosphere it is from ये रहेगा 20 to 50, and 50 to 80, and 80 to maybe like 700, and 700 and above. That is exosphere. So how could we understand all this? So the satellites' positions are all here. Are you seeing? It is in the space, exosphere. The rockets or the movement is out of the which sphere? It is mesosphere. And normally plane doesn't go above troposphere or close to the stratosphere only. It cannot fly above that.
because the level of oxygen will be totally cut off. Actually लोग oxygen maintain करता ही है chamber में क्योंकि any time होता है like में, but then they cannot completely move above troposphere or stratosphere to put them into challenge. So here we have this influence of what? What are all these? Meteorites. So normally they doesn't reach to stratosphere if they are more bigger, if they are more burning, then only it will reach to stratos or tropos. If not, normally mesosphere. And above mesosphere it is thermosphere where the temperature might be very high. In between thermosphere only we have a small sphere which is called as ionosphere, where the traveling of ionic waves which will be absorbed by the satellites which are in the exosphere. Okay. So we will read, we will mark, and then you write one by one, very slow. Okay. So he'll start with the first part. Let's see. Good, eh? Chalo. Keep the pencils ready. If you think it is difficult, I will take my first. Troposphere. Ah. Extent. The troposphere is the lowermost and densest sphere. Pile point, underline. Lowermost and exit. Notebook में भी इतना ही very good. So, lowermost and densest layer. Next. Its height varies from 18 km at the equator to 8 km at the poles. Underline 18 km from equator. Why it is so from equator to it is travel out? And pole से कितना है? 8 Only 18. kilometer. अभी समझा why 8 to 18? Yes. pole से 8 किलोमीटर ही है. But अगर equator से आप travel करके जाएगा 18 किलोमीटर आपको जाना पड़ेगा. Next. Characteristics. हाँ. एक काम करो पहले ये लिखो. Characteristics में लिखो. Hey, anybody is having this in your house? Reliance का केबल कनेक्शन है अच्छा है. मैंने ये मेरा एयरटेल का हाई अमाउंट बिल है 2,500 का बिल आता है. और डिश थ्रू आता है. जियो का के सिंथेटिक केबल से आता है ना. अभी दिवाली में मैं एयरटेल कैंसिल करके जियो ले लूँ. एक 4 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स देखा मजा आया. Very carefully लिखना and understandingly लिखना. Why writing with a pencil now? Where is your pen? For God. Not forgot. You should be given 4 goats. वो तुझे चरेगा या तू उसको चरा के लेकर आएगा? How come you are coming without a single pen? Last week, why not attending my lecture? That also. No, I was not feeling well. Hey, don't tell that. दोस्त से बोला रहेगा कि सर को मत बोल, मैं भूल गया था. Shall we write the next features? This is the main part of proposal. Then we'll watch some lovely video. Point number 1. Yes. If functions it comprises of 75% of the atmosphere. Next, a regular decrease in temperature. With altitude. And what is altitude? Height. Height. अच्छा जैसे जैसा हाइट जा रहा है उसका टेम्परेचर रेगुलरली गिरते जा रहा है.
Next. Third word, no? Many turbulences, I'll explain this also. Many turbulences are observed. Many turbulences are observed here, are observed in this sphere. Many turbulences are observed in this sphere. Next. So what is turbulence? I'll tell you. Frequent changes in weather phenomena. Frequent changes in weather phenomena. Frequent changes in weather phenomena. Next. As it is heated more from below, it is heated more from the below than from the up. And its upper limit is known as upper limit is known as tropopause. Now let's understand what is this sphere all about. ये मेरा tropopause है. Okay. और ये मेरा troposphere है. As the information says, it is from the equator. If you want to touch the troposphere, it is you have to travel 18 kilometers. But from the poles, which poles? Either from the North Pole or from the South Pole, it is just only 8 kilometers. Now, normally, majority of the sphere are heated from the up. Only ये एक ही sphere है जो it is heated from the down. Why or how? Whenever we talk about sun's radiation, है ना, reaching the earth, sun heats first the densest or the lowermost layer of the earth. Correct? Lowermost को पहले heat करेगा. Then ये ऐसा बोलते हैं हम. So this is incident ray. And आपको normal labs बोलते हैं इसको. And this is radiated or reflected ray. So never sun will heat from the top to bottom. So ये जो incident ray जितना quickly आके इधर गिरता है, the temperature will be maximum here. At the ground level. At the ground level. Ah. When you move higher, 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 there is a steady decrease in temperature. Correct? Now, do you think that it is very far away from the ground? No, it is not very far. So the radiation can heat which sphere? Troposphere. So that is why it is heated from the ground, not from the earth. And your turbulences क्या है? Since there is great variation in the temperature, alternate changes रहता है quick. The air may not be very steady and stable. Because if you have traveled in an airplane, or not traveled, if you flew in an airplane, there is many times that captain or the co-captain will announce, we are experiencing turbulences in the plane, in the sky. So please bear with us. That is the time the air pressure is not the same. The wind movement may not be the same. जैसा हम लोग expect किया वैसा नहीं है. Is there any same? Why? उस जगह पर वो turbulences था, and उस time पर you have to just hold on to it. Nothing you can do. So here frequent turbulences are observed. Where? In the troposphere. And upper limit of the troposphere is known by its name. Tropopause. उसके बाद stratosphere start हो जाएगा. Very clear? Yes. So I'll play the video also. Let's
majestically enjoy the video now. What is Earth's atmosphere? Earth is surrounded by its atmosphere, which is the body of air or gases that protects the planet and enables life. The three major constituents are nitrogen, oxygen, and argon. Earth's atmosphere has 5 distinct layers. Let's look at each, from closest to farthest from the Earth. Troposphere. The layer of the atmosphere closest to the Earth is the troposphere. It begins at the surface of the Earth and extends out to about 12 kilometers. This layer is known as the lower atmosphere. It's where weather happens and contains the air humans breathe. The temperature of the troposphere decreases with height. Stratosphere. Above the troposphere is the stratosphere. This layer is where the ozone layer exists and scientists send weather balloons. Jets fly in the lower stratosphere to avoid turbulence in the troposphere. Temperature rises within the stratosphere but still remains well below freezing. Ozone layer. The ozone layer is a region of Earth's stratosphere that absorbs most of the sun's ultraviolet radiation. Mesosphere. The layer, where the air is especially thin and molecules are great distances apart, is the mesosphere. Temperatures in the mesosphere reach a low of -90 degrees Celsius. Meteors burn up in this layer. The stratosphere and the mesosphere are known as the middle atmospheres. Thermosphere. The thermosphere rises several hundred kilometers above the Earth's surface. Temperature is very much affected by the sun here. Temperature increases with height and can rise to as high as 2000 degrees Celsius. Nonetheless, the air would feel cold because the hot molecules are so far apart. Kármán line. The Kármán line is based on physical reality in the sense that it roughly marks the altitude where traditional aircraft can no longer effectively fly. Exosphere. The exosphere has very few atmospheric molecules, which can escape into space. Some scientists disagree that the exosphere is a part of the atmosphere and instead classify it actually as a part of outer space. There is no clear upper boundary, as in other layers. Exobase. The lower boundary of the exosphere is called the exobase. It is also called the critical altitude, as this is the altitude where barometric conditions no longer apply. Atmospheric temperature becomes nearly a constant above this altitude. If you've enjoyed this video, don't forget to like, and I would like to say to the viewers who actually subscribed, thank you. Very shortly, did he explain? Yes. What was the core of it? Let me see. अरे बोलो. There's nothing. वो बोल रहा था एरोप्लेन कहाँ से ट्रैवल कर कौन से ट्रोपोस्फीयर होता है. See, so the next layer, stratosphere. One more that scientists, some scientists consider exosphere in the atmosphere. Stratosphere. What is that? No, some scientists consider exosphere as a part of the atmosphere. Stratosphere. Because to certain extent it is a part of atmosphere. After that layer, it enters into space. There are only one pilot till date who has entered into space using his aeroplane. Extremely fastest. I have the video actually later. अपने एरोप्लेन में बैठे बैठे वो स्पेस में चले गया. तब क्या बोलेगा? Second layer, stratosphere. जिंदा था when he came back. अभी है. हाँ. अभी कैसा रहेगा इतना साल में? It's very old. वीडियो में है ना? But अभी नहीं बताएंगे. बात में सर प्लीज. नाम बताओ नहीं. नाम से क्या करना है? It's a very special flight made by US. Right up, stratosphere. It lies above tropopause. It lies above tropopause and extends to a height of. Lies above tropopause. देखो connectivity याद रखने का. Tropopause and to the extends to a height of 50 kilometer. And extends to a height of 50 kilometer from sea level. Run. Features.
Features. Point number 1. Air is thin, cold, and dry. Air is thin, cold, and dry. And average temperature, look here how much it is. Minus 55 degree Celsius. Air is thin Cold, dry, and dry. Thin, cold, and dry. average temperature is Minus 55 degrees Celsius. It may go minus 60, 70 also, it may come to minus 40, 30 also. Next. Ozone is found between. Ozone layer is found between is found between 20 to 50 kilometers. Is between 20 to 50 kilometers. 50 kilometers. Okay, what is this ozone? Usually Oxygen, O3. And normally we call ozone as a filter. Filtering what? The harmful which rays of sun. Come on. UV rays. What are UV rays? Anybody? Ultraviolet. Ultraviolet rays, which can be very dangerous. अभी ये ओजोन लेयर में भी बहुत बड़ा बड़ा होल्स है, लीकेजेस है, जिसकी वजह से यू एंड मी आर वरीड, नॉट इवन मी, एंटायर सेट ऑफ ज्योग्राफर्स आर वरीड. और इसका सेट ऑफ प्रॉब्लम अलग है. ओजोन लेयर डिप्लीशन एक आएगा, ग्लोबल वार्मिंग एक आएगा, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट एक आएगा. सर एक ही है, but ozone layer it is mainly by the airplanes which are using the spiral jet airplanes exhaust. Chlorofluorocarbons, जो हम लोग ये एसी वगैरह का आजकल तो मेजॉरिटी एसी में ये नहीं करते हैं, गैस है. जितना ज्यादा हम एक्सेस यूज करेंगे, फिर एरोसॉल्स है, पेंट है, प्लास्टिक्स में कुछ जगह पर है, तो ये सब मिलने की वजह से which is getting depleted. Ozone, which is found in which sphere? Stratosphere. And which length? 20 to 50. 20 to 50. 20 तो फिर मैं बार-बार. चलो, let's go to the next one. Its lower layer is completely devoid of water vapor. Its lower layer is completely devoid of water vapor and ideal condition for flying jet aircrafts. Ideal conditions for jet aircraft. ये आप जब भी फ्लाइट में गया है या जाएगा ना, देखना वो हमेशा वो 8,000 meters above बोलता है या 10,000 meters बोलता है, मतलब it is close to 8 kilometers. 10,000 तो 10 kilometers. तो he will not say 20,000 around, मतलब खत्म. ये जो MS-370 याद है हमको दिखाया था, it crossed 15,000. तो कितने किलोमीटर के ऊपर चले गए? 15 किलोमीटर. और कौन सा लेयर में घुसा रहेगा? स्ट्रेटोस्फीयर से छोड़ के मेसोस्फीयर में घुसा रहेगा. पर यू टर्न मारा उसने, फिर से टर्न अंदर लिया, इंडियन ओशन की तरफ आया, फिर अंडमान की तरफ निकला, पर कहां जाके गिरा तो पता नहीं कहाँ. it has been disclosed as ghost plane, not found till now, not even the black box. Anybody knows what is a black box? No. Actually, color of the black box is green color. अरे seriously? ब्लैक बॉक्स क्यों बोला? ग्रे कलर का ग्रे बॉक्स होना चाहिए. When you have seen these pilots flying, na, they continuously talk to the ground control station. ATC से बात चालू करता है, and he keeps on recording. कोई भी flight या chopper या कुछ भी गिरेगा ना, अगर वो black box मिल गया ना,
उससे हम लोग पूरा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि क्या हुआ रहेगा टेक्निकल ये तो निकालता नहीं है बिकॉज इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉक्स कितना भी बड़ा फाइल अगर तो उन्हें अंदर ही पूरा रिकॉर्ड होगा एंड दे कंटिन्यूअसली टॉक टू द एटीसी एंड ये प्लेन में वो भी बेनिफिट नहीं मिला ब्लैक बॉक्स भी नहीं मिला तो ब्लैक बॉक्स कितना बड़ा भी एक्शन लेगा तो वो मिल गया ना देन यू विल गेट एन एक्सीडेंट हां ऐसे कंटिन्यूअसली इज रिकॉर्डिंग ग्राउंड कंट्रोल से पूरा बॉक्स का अंदर सिग्नल भी नहीं देता था
quite a source full of information. Huh? So look how plain and that is black box. Sure. Let's write the next one. I'll give you a 5 minute break. Now only question coming over here. Revise up. So लड़की की तरह कज़न में बैठे वैसा क्या हो गया? इसलिए टेंशन आ रहा है. अरे बोल दे. आज वो नहीं है तो उसका ही भरपाई ये पूरा करा. चलो उसके लिए करो. अरे you're a boy, you're a brave man, you look at the future. है ना? ऐसा नाजुक कच्ची कली की तरह बैठे तो कैसे चलेगा? समझाया तेरे दोस्त को? यार लड़की will take you for a ride. के टेंशन में नहीं मुझे वाचवा चला करना है. मतलब वाचवा ऑब्जेक्ट है. ओके तो यहाँ से अपना मोड ब्लैक बॉक्स कर सुना ना. हाँ. Write down the last point. Temperature rises from -60. If you are feeling uncomfortable, switch off the AC. Where is the remote? I can see. Sure. You are tripping and between temperature rises from -60 degree at the base. अभी एकदम टेंशन में दूसरा चीज़ है. -60 degree at the base to 0 degree. At the stratopause, दो जगह पर ही pause आएगा, उसके बाद pause नहीं है, फिर हम बात करते हैं. Stratopause, which is the upper limit of this sphere. तो जहाँ भी आप लोगों ने वो किया है ना डायग्राम, स्ट्रेटोस्फीयर में स्ट्रेटोपॉज बनाओ, ट्रोपोस्फीयर में ट्रोपोपॉज बनाओ, जहाँ ट्रोपोपॉज खत्म हो रहा है देखो, है ना? और अगर ऐसा रहेगा तो कैसे करेगा? नहीं होगा. Don't. Upper limit of the stratosphere, sorry. उसके आगे stratosphere खत्म हो जाता है. And let us have mesosphere. अभी हम रीड करेंगे, मार्क करेंगे और लिखेंगे, ठीक है? चलो. रीडिंग आगे मिल लो. तो बस आपको भी थोड़ा सा ब्रेक चाहिए ना? Extend. The layer lies above the stratosphere and extend to a height of 80 kilometers from the ground level. Underline extent of 80 kilometers from the ground level. वो याद रखना. Next. Characteristics. अभी मत लिखो, my dear boy. Want to run side of the time. The temperature in this layer decreases with height and reaches a maximum of -110 degrees Celsius. Reaches a minimum of Underline temperature increases with increase in height and minimum of -110. at the altitude of about 80 kilometers near the mesopause. The upper limit of this layer is called what? mesopause. Underline that upper limit. अभी इतना ही लिखो जितना उसने मार्क किया है. Mesopause.
Shall we? Yes. Ali reconnect setting. Due to reflected sunlight from meteoric dust particles, there are wispy clouds found in this layer. Underline the word wispy clouds, जो जल्दी जल्दी मूव होता रहता है, and इधर meteorites का भी मूवमेंट है ना? Now the last person, the last layer, exosphere. Thermosphere. Sorry, thermosphere. Right. You only. It extends from mesosphere and consists of two layers, Hmm. ionosphere and exosphere. If I explain, when we are moving to this thermosphere, it itself is having two. One is ionosphere. Now, why this ionosphere is so important for you and me? Iron particles. Iron particles. नहीं जो भी था वो Iron. मूव कर रहा था ये यहाँ से पूरा लेयर को हम लोग ने thermosphere बोलते हैं. Because this is no doubt our satellite. But then, if I want to fix a satellite here, the iron movements has to be here. So my satellite fixing will be somewhere here, and from here, the space journey starts. I can say X, but space. So what are these ions? अभी chemistry में आएगा. Those are those minute invisible particles which can transmit your waves. Which waves? TV, radio, telephone. Okay. How does your mobile phone catches the call so quickly? As soon as you connect the call, it goes to that particular satellite, and it very quickly connects the person by converting that same signal. How quick it should. So that is why entire thermosphere divided into one is ionosphere and other is exosphere. So where our satellite will be somewhere in the exosphere, just above the ionosphere. शायद वो वीडियो में भी वही दिखाया ना? चलो move. हाँ सर तो हम क्रूज पे कभी जाते हैं तो वहाँ क्रूज पर में क्यों जाते हो? नहीं मैं गया हूँ तो वहाँ पर कॉल कनेक्ट नहीं होता सैटेलाइट पे देखो, होगा ना satellite connections in the mainland and satellite connection in the waterland. Trouble है क्यों? वही बता. Normally the waves of the water might not allow the strong signal to get connected. Satellite phones ज़्यादा use करना पड़ता है. ऐसा तो फ्लाइट में भी किधर कनेक्ट होता है? हाँ फ्लाइट में भी होता इम्पॉसिबल है वो तो बंद करने बोलते हैं फिर भी तो एक बार ऑन करके देख नहीं होता बट अगर हो गया तो तुरंत पायलट चलाएगा कि somebody बिकॉज़ वो बेचारा 24/7 कनेक्शन वो बात करता रहता है और तू बोलेगा हाँ मम्मी खाना बनाए क्या मैं अपने 10,000 फीट पे you can talk वैसा नहीं कि नहीं you can talk you will get connected but it will intersperse with the fellow because देखो when you are flying your flight up ना you do not have left turn मार के आगे से right turn मार के निकल जाए वो तो बेचारा हवा में ही है he is a flying fellow but that fellow who is at ATC or GTC the fellow who is at the ground he is the person who is guiding their flight is discussed पे ये डायरेक्शन पे जा रहा है उसी ने तो एमएच 370 गिरा मतलब उनका लास्ट जब कांटेक्ट हुआ है वो बोला कि मैं 12,000 फीट ऊपर जा रहा हूं 12,000 मतलब वो 20 किलोमीटर के ऊपर गया देन आल्सो दे वर एबल टू कांटेक्ट जब 15,000 फीट गया खत्म बट मिलिट्री रेडार ने पकड़ा उसको आधा घंटे के बाद यू टर्न मारे बट मिलिट्री रेडार ने भी आधा घंटे ही पकड़ा उसके बाद हो गया क्या गायब हो गया उसका ट्रांसमीटर मिट गया या उसका ब्लैक बॉक्स बंद हो गया नोबडी राइट गिव मी द प्रोटोकॉल ionosphere extends up to a height of about 400 kilometer अंडरलाइन देखो इतना किलोमीटर तो हम जाना कहीं इम्पॉसिबल है ना फ्लाइट में तो बैठ के नहीं जाएंगे सेंट्रल रॉकेट में बैठ के जाएंगे यहाँ से मेरा गांव ही 400 किलोमीटर हां यू आर सेइंग लाइक दिस हां तो 400 क्या हम लोग तो 12-15 किलोमीटर में तो उड़ रहे हैं उसके आगे किधर उड़ रहे हैं खत्म हमारा जिंदगी हां तो 15,000 फीट इज हाउ मच 12 किलोमीटर तो क्या 400 किलोमीटर के ऊपर उड़ेगा फिर आपका पायलट बोलेगा वी आर फ्लाइंग अराउंड 40,000 फीट अबव सी खत्म तेरा प्लेन तो वैसे भी बढ़ जाएगा बिकॉज़ उसका आज ही मैंने एक मूवी देखा चाइनीज मूवी था थोड़ा बहुत था चलेगा क्योंकि वो लोग कुछ भी दिखाता है मतलब पहले तो एक उसका जो विंडशील्ड रहता है ना पायलट का वो जैसे क्रैक होता है थोड़ा टाइम के बाद वो हाथ रखने से पहले फट जाता है तो दो पायलट में से एक पायलट तो बेचारा अंदर ही घुस जाता है
The whole flight is there. How come? मुझे तो समझ में नहीं आया क्योंकि it is made out of triple और double वो मतलब military edge glass रहता है वो कभी टूटेगा नहीं। But भी है ठीक है फिर उतारते हैं कैसे तो लेकर आते हैं तो एक छोटा भी होल अगर प्लेन का बॉडी में गिरा ना with that height that hole can be only this much big this much but with the air pressure within no time it can become very big। तूने कभी वो दरवाजा बंद करते बोलते देखा है? हाँ ऐसे बहुत डेंजर से वो लॉक होता है। प्लेन का ऐसा कैसा हाँ फिर क्या? हाँ पर But it ऐसे has 3 levels of locks। हाँ थोड़ा भी अगर एयर घुसा तो खत्म होता है। क्या कर सकते हैं ना उतना हाइट है एयर प्रेशर इज वेरी हाई तो खोलना ही है। खोलना नहीं पागल करने का डॉक्टर गलती करके लगेगा तो खोलना लग नहीं जाएगा। है not even 1 inch of air should come in that is the reason। चलो चलो आप लोग लिखो ये थोड़ा आपको ब्रेक देता हूँ write down why is he making faces like this क्या हो क्या गया you are missing your friend today call her quickly उसके बगैर जिया नहीं लग रहा हाँ क्या हो क्या नवी तुमसे अटैच करके मैं चली है क्या ये तो बाकी तरफ दोनों दोस्त उसको स्माइल्स दे रहे हैं मुझे भले सर के पीछे से दिखा है ना ठीक है अंदर की बात आपको दिखाऊंगा we are in exosphere ना thermosphere Ionosphere हाँ it extends from mesopause or mesopause including A ionosphere B exosphere including ionosphere B exosphere थोड़ा पेपर पूरा repeat करो। it extends from mesopause including ionosphere A B exosphere now change the para exosphere sorry ionosphere extends up to a height of 400 kilometers different features I'm trying to give the shortest possible explanation mainly contains point number 1 features mainly contains electrically charged particles ions really आप लोग ने अरोरा बोरियलिस एंड अरोरा ऑस्ट्रेलिस सुना है वो तो हार्ट बीट पता है करेगा। अरोरा पता है वो ऐसे स्काई में ऐसे now scattering lights बोलते हैं नॉर्मल लाइट्स only नॉर्वे में दिखता है particles electrically charged particles called ions second point it reflects radio waves back to the earth's surface and enables wireless enables supports wireless communication बार-बार ये बोला था ions तो ये next exosphere uppermost layer इसके आगे कोई लेयर नहीं खत्म uppermost layer with which lies between 400 to 1500 kilometers
which lies between 400 to 1500 kilometers. तो इसको फीट में कैसे कन्वर्ट करेगा? 400 को 112 नहीं 40,000 फीट से लेके 1,50,000 फीट उड़ सकता है अपना फ्लाइट? नहीं उड़ सकता। फिर भी एक बंदा होगा और चाहिए। नाम भी नहीं बोलिए। नाम भी नहीं बोलूंगा, वो फ्लाइट का ये भी नहीं बताऊंगा। वो आप लोग देखने वाला नहीं बंद करना नहीं, आप लोग फाइंड आउट करो ना, सब कुछ मैं ही बोलता रहता हूँ। व्हाट इज इट? चलेगा सर आप ही बताओ। तो करो अभी लोग अच्छी चीजें याद भी कर कर सकते ब्रेक नहीं है ना, कंटिन्यू है क्या ब्रेक? अभी बोला हाँ बोलो। मैं ब्रेक नहीं है, कंटिन्यू है। एग्जॉस्ट है, इसके बाद लेक्चर है कोई? है ना आपका ये ये दोनों ब्रेक ब्रेक नहीं दिया, 2 घंटा कंटिन्यू दो। हाँ बिकॉज़ एग्जॉस्ट पे and why they have given, because we have to complete this ICSE course. आज मेरा हो गया था हां एक फाइनल 10th इसलिए आपके पैर पड़ेंगे ना 6 बट आप मिलोगे ना कभी कभी संडे को टेस्ट के लिए आप ही को भी आते बट मैं जिस टाइम पे आता हूँ कोई नहीं सर आप 9th में को भी पढ़ा था ना 95 है कोई हमारे 9th में नहीं 10th में है 10th में भी है 5 क्यों मेरे को नहीं कोई पूछ लो और ये इसने किया है ना, तो उसका नाम क्या है? हमारे दोस्त वो बोल को इसने नहीं दिया नहीं वो तो सीबीएसई की थी वो जो बोल रही थी ना वो कोई तो योगा का योगा। उससे वो पता है मैंने देखा, चश्मा है इसको ऐसी है एकदम हाँ एकदम मतलब टॉपर टाइप लगती है हमारे टॉपर बच्चे टॉपर लगती है चश्मा और सीधे उसको बच्चे 9 CBSE इसलिए ऐसे कुछ तो है नाम नहीं याद उसने वो she is टेस्ट there in my lectures ये सीबीएसई 10th मेरे को एमबीबीएस में दिखा है उसने इस बारे में हाँ तो नाम क्या है बच्चे का? वही नहीं पता ऐसे मुझे नाम तो याद नहीं रहता वही चश्मा एक ही लड़की चश्मा होगी ना जैसे गोल गोल चश्मा में एक ही लड़की को 10 सीबीएसई के गोल गोल चश्मा गोल सब देखे मुझे इतना शक्ल याद नहीं रहता कि गोल चश्मा ये चश्मा चश्मे तो सब पहनते हैं मतलब बहुत सब अरे बट इनके ये क्लास सब में मुझे कोई याद नहीं भी तो रहना रहेगा चाहिए ना मुझे यानी तो छोड़ दे once I asked मैं always asked to CBSE instead of asking to ICSE I have asked to ICSE instead of asking to CBSE उसे उनका पापा से मैं मिला है and I spoke to him also about that चलो एग्जॉस्ट पे लिखा अपर मोस्ट लेयर हो गया फीचर्स it gradually merge with this is a nice word. It gradually merge with interplanetary space. Oh, what is this word? space between the planets Wrong है कुछ भी Now let's understand this word now. Because we always believe when you guys are taken to a new spot or a new venue or etc. If he is a very good marketing person, वो बार-बार बोलता रहेगा here comes, now we are stepping in, now we are going to see अरे कब से आने करते सब कुछ दिक्कत तो नहीं है ना? Even I was also trying to say that we are into exosphere, we are into space. अब बोलेगा सर कहाँ तो space start होता है? जहाँ क्या खत्म होता है हमारा एक्सोस्फीयर खत्म होता है वहां से हमारा स्पेस स्टार्ट हो जाता है सो इट इज इंटरप्लैनेटरी स्पेस वी आर लिविंग आवर प्लैनेट विच प्लैनेट अर्थ एंड वी मे एंटर इनटू अनदर प्लैनेट बट वी डू नॉट अर्थ के बाजू में थोड़ी दूसरा प्लैनेट था बाजू में बट स्पेस में तो मैं घुस गया Understood? So the excitement of seeing the Earth outside the Earth is something amazing. It appears a blue planet, and it appears very silent planet. So it appears very beautiful also. No, better to use the cancer data. I have seen the place where it is known as interplanetary space. Here, if I enter into Moon, I can see the Earth. But going to Moon itself, everybody knows what is the trouble in data escape. Forget about Moon.
Let me just come outside my space. Which space? The earth, and then see my plant. So the X2 plane, which if I get it, I'll show you. That fellow has increased the speed in such a way, he was flying in Mach 5 speed. That is why he could exit outside the earth. By the time the plane went little bit clueless, he understood that I have left the earth. And very quickly he had to turn back and enter into earth once again. So this is, what is that word? Interplanetary space. Correct? There is no other planet next to it. But I have left my planet. Right? Sure. X2 का भी शायद मोबाइल में दिखेगा X2 नहीं दिखता है right interplanetary space लिखा then it's fine. This layer temperature or the temperature in this layer increases with the height. अभी तक decreases with the height है अभी ये increases with the height. And very little information about atmosphere and very little information about atmosphere beyond 640 kilometers from the sea level. मैं इसके आगे ज़्यादा information नहीं है. Last point. Density is very low. Density in the cell is very low, and hydrogen and helium are the two main gases found. Hydrogen and helium are the two main gases found. I can put it down for 5 minutes. Correct. So the topic है हमने सीखा होगा. And we can almost end this chapter. Any product goes on like definition. Want to go out and come down, wash more than jaldi aa. Goes on like definition. So in school level, exams vacation already started. And when is the school exams after the vacation? Second December. तेरा भी term 2 ना 2nd December तो भी time है रे. तो school कब खुलता है? 16 no? 19. हमारा तेरा 10th 3 को खुल रहा है मेरे यहाँ पे बहुत स्कूल हमारा तो 10 को ना हमारा 507 को खुल रहा है. फिर भी मुझे गुस्सा आता है. मुझे लगा 12-13 को खुलेगा. हमारे प्राइमरी को 10 को प्राइमरी प्राइमरी को हमारी पढ़ाई में चिल कर रहे हैं हम भी गए हम वही पास करते हो आप देने डायरेक्टली थोड़ी कोई टेंशन थोड़े लोग हैं प्राइमरी भी केजी के बेसिकली एग्जाम में देने जाता तो मतलब खुद ही से होता है. बायो के से तो अपने आप तो नहीं गिन रहे हैं उसको. और क्या फील होता है राइट करके से इस चीज को सबसे अंडरस्टैंड हम वैसे किसी को आईएएस ले आईएएस बोल पे क्या लाइफ में आया चल रहा है. कुछ नहीं पढ़ाई वो तो थोड़ी इंटरेस्टिंग लग रही वही है नया है क्यों? पता नहीं थोड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है क्या कौन सा पढ़ाई है? ज्योग्राफी. सारे सब मेरे को तो मैथ अभी 10th में आ जाए इंटरेस्टिंग कर दे रहा है. तो मैथ से अच्छा लग रहा है हार्ड है कंट्री लोग नहीं नहीं इससे तो इजी है.
I always believe 10th is easier than 9th. Overall ऐसे geography. Overall ही बोलता हूँ, because as far as my subject goes, there is a lot of choices is given. मतलब समझाना मैं क्या बोलूँ? Out of 8 modules आज ही मैंने उनको बताया कि 5 मॉड्यूल को बहुत simple. हाँ but वो 5 मॉड्यूल की सॉल्व नहीं किया फिर स्टार्ट हो गया. सबका मतलब अगर इसने मॉड्यूल 3 लिया और मैंने 1 लिया तो क्वेश्चन पेपर अलग बनेंगे. तो 8 मॉड्यूल में से 5 मॉड्यूल सेलेक्ट करना, ठीक है? हाँ. मॉड्यूल सबसे आएगा. अच्छा सारे आने के अटेम्प्ट 5 करना. एक मॉड्यूल का 10 मार्क्स है. तो 5 to 5 is 50 हो गया. एंड सेशन के नहीं एक मॉड्यूल में तो 4 चैप्टर. मतलब 4 चैप्टर से पूरा for बचेंगे. the 20. हाँ तो फिर एक मॉड्यूल मतलब क्या है? एक चैप्टर का एक मॉड्यूल थोड़ी. वही तो पागल. कुछ मॉड्यूल है जहाँ एक ही चैप्टर है बट वही लेंगे. बट वैसे तुम्हें जो पढ़ के गया वैसे क्वेश्चंस नहीं है तो हाँ. जैसे अभी मैं मास्टर्स में मैंने मेरे उधर के स्टूडेंट्स को बोला कि हमने 4 ही क्वेश्चंस लिखे. सर ओनली 4 क्वेश्चन तो आपको हाफ टाइम पास. मतलब एक क्वेश्चन के लिए कम से कम 24 पेपर्स लिखना है. 24 पेपर्स फिर 25 मार्क्स का एक क्वेश्चन है. तो फिर क्या तो देखिए 4 लाइन में क्या आएगा तो 25 मार्क्स. डिग्री में तो और भी इजी है. ओनली 5 क्वेश्चन लिखना है. ईच क्वेश्चन कैरीज 20 मार्क्स. 5 then there is only 14 papers, 15 papers. सब जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेगा सर आपको आपका निकनेम क्या लगता क्या है? मेरा कपड़ा प्लेट के आपका निकनेम आपके अकॉर्डिंग क्या है? आई डिडंट गेट इट. समझ गए? आपका निकनेम क्यों आपके चाहिए according- इनको? ऐसे ही. ऐसे ही नहीं सर्चिंग संडे नहीं लास्ट में पूछा तो था. हाँ इंस्टा का उसको ये इंस्टा का हैंडल ही है उसको. निकनेम और उसका क्या रिलेशन? बट अरे नजर भी थोड़ी ना ऐसा रहता निकनेम भी डालेगा. हाँ कुछ और भी डालेगा. तेरा नाम बताया तो मैंने अरे बिजू उसको सर का है? try करने वाला है. हाँ बिजू सर का मैंने देखा है. क्या है? मैंने रिक्वेस्ट यूजर की ने है. दिया है. सर ऐसे बैठे हैं चेयर पे और डाला है. बहुत सारे पोस्ट. अरे यूजर ने क्या है? मेरे को याद नहीं है. तूने क्या डाला? बिजू. एक भाई साहब ने चेक किया इनवाइट भेजा बट याद नहीं ये कौन सा हाँ. मेरे को याद नहीं है. रिया ने मेरे को भेजा था. मेरे को कैसे याद रहेगा? रिया ने भेजा था. हाँ हम लोग यहाँ पे. सर ने एक्सेप्ट किया? नहीं पागल तेरा यूजर. अरे अभी तक देखा नहीं है सर ने. मैंने कितने दिनों से भेजा आपने देखा नहीं? कितने दिन में हुआ है वो? 10 दिन से भी सर हाँ. आते तो उनको याद ऐसे नहीं तो हुए ना. 10 दिन में देखा ही होगा ना. ये पूरा रिमाइंडर दिया. हाँ तो क्या मैं आज दिन बता देख अगले वीडियो तू कैसे. बहुत लेक्चर दो बायो दो केमिस्ट्री हुआ है. इसके वजह से नहीं मिले. कल ही मिले थे. तो रिमाइंड करवा दे और क्या. मेरा इसमें तो दूसरा तो बोल ही होगा. नरेंद्र मोदी सचिन तेंदुलकर सारे मिनिस्टर्स एजुकेशनल वही है. मैं किसी ऐसा तो उनके साथ फोटो आपका प्राइवेट है या फिर पब्लिक अकाउंट है? फिर तो मैंने तुझे अंदर नहीं किया तो प्राइवेट तो हाँ है. तो किसका मिला? सिविलियन सर का मिला था. वो इंग्लिश के में ऐसे उसको एस अंडरस्कोर उसको लिखा है. मैंने रिक्वेस्ट की भेजी. नहीं पागल है. ग्राफी में टेंशन रहती है. वो कौन पढ़ा रहा है? उससे ऐसे संगीता. हाँ संगीता मुखिया प्रणता. उसने आता था यूटी के वेबसाइट में था बट ये देख के राकेश किससे फ्रेंडशिप करेगा सोच ले भाई. नहीं हम लोग मिले हमको मिलता है. तेरा हाइट और वेट कितना है कि नहीं. There was a tendency used to take geography also. Outside classes. I remember joining UT as 12th standard economics. Okay. 12th स्टैंडर्ड आपने कब ज्वाइन किया? कौन सी ईयर? 2008 ना. 8 या 9 में join किया. उस तक आप इधर ही हो. नहीं 9 years I left them.
I went to this stadium, US में. और आय कब आप? Till 16, 17 में. तो भी बहुत हुआ। 5-6 साल। Now 7 I was one of the staff मेरे members. 8 साल हो गए। Still में I told friends कुछ नहीं. कुछ नहीं क्या चाहिए कुछ नहीं किया थे। लेके नहीं जाते ऐसे नहीं है वो लेके जाना नहीं। हाँ मैक्सिमम रहेगा तो पेरेंट टीचर्स के लिए रहेगा उसमें तो मैं नहीं चाहता आई डोंट हैव एनी तो हमारे लिए नहीं रहता। मेरे पेरेंट्स आते थे लेकिन मेरे बोलते थे आपके लिए क्या चाहिए वो तो बता नहीं कभी नहीं वही कभी भी ऐसे इधर एक बोलूं क्या एक अच्छी बात क्या है ना वी ऑलवेज बिलीव ओनली इन स्टडीज सो दैट इज द टाइम पास रीजन नहीं होता। हाँ प्लीज टाइम पास क्या करने के लिए देखो दिस इज एन इंस्टीट्यूशन व्हिच इज प्योरली फॉर स्टडी अच्छा है ना ये बाकी लोग स्टडीज छोड़ के क्या पिकनिक है ये है फंक्शन है ये सब करने का क्या है उल्टा हमारा जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन पे होता है ना यू अटेंड इट ना यू फील हां भाई ऐसा कौन सा प्राइवेट एवरी ईयर जो होता है ना हाँ टेंथ नहीं स्टूडेंट्स के टीचर्स के लिए भी होता है टेंथ अरे बीच में भी हुआ था ना टेंथ हाँ, तो वही, यूपी वही। के टेस्ट नहीं दिया और अपना and something in a very class way मतलब मुझे तो बहुत पसंद है क्योंकि they purely do it only for studies ऐसा नहीं कि ये इसको बुलाया उसको बुलाया नाचो ये करो तो अभी ड्रेस हमको अच्छो थैंक यू हाँ चलिए यस now everyone just understand when we talk about this ozone layer it is found where I said above the tropopause and in between the stratosphere. It is how much to how much kilometer? 12 to 15 kilometer. And what is its important? It is a layer which has this O3. What is O3? That is why it got the name ozone. 3 molecules of oxygen combined to form 1 molecule of oxygen. It has so much power, ozone. Sorry. It has so much power. There is a hidden ray inside the sun's light, which we call it as UV. What is UV? Ultraviolet. For a human being, for an animal, it is as dangerous, which is also dangerous for even plants. When plants burn out, or when the plants are totally ruined by this ultraviolet radiation, the very survival of human being and animals becomes a real threat. That is why the existence of this layer is very, very important. But of late, it has been seen there is a rapid decline, not decline, destruction of this layer, especially in the Antarctic and Arctic. There is a big hole is developed. The hole is not developed because there is no human beings are there, but due to the lowest temperature, minus 40 to minus 60 degree, the ozone layer depletion process is very fast, right? So the scientists are developing some new technique how to stop this ozone layer depletion. अभी causes क्या है कि जितना भी हम लोग coolants use करते हैं whether it is AC, refrigerator, it all has a substance called CFC. What does CFC stands for? Chlorofluorocarbons. Use of this and which emits in the atmosphere is different. Second, if you have seen aerosols, that paint that we use it in a spray format, correct? That also has a substance which might. So now the government of India, government of maybe like several countries have come together. They want to save the earth from ozone layer depletion. Then what we are planning to do, slowly and steadily reduce the deforestation and increase the afforestation. Okay. This jet fighters, if you have seen, normally they are just about stratosphere. Did I say? The exhaust, the fuel they use, and the exhaust is also very dangerous for this. The time the ozone layer is completely depleted, then survival of human being with the sunlight will be not possible. You cannot cover your entire body or anything with a space suit, right? So it has been provided naturally. We cannot create it, but at least we can reduce its potential. Okay? So first you have to understand what is ozone layer, what is its importance, and causes for its depletion. Okay, we will just read. Let's start from here. Definition of ozone layer. Page 103. Ozone hole. An ozone hole is an ozone depleted area. Ozone क्या? Ozone. ozone हो जाएगा. This ozone. Okay.
An ozone hole is an ozone depleted area. It was detected through satellite imagery conducted by NASA in the USA. Ah. Subsequently, subsequently, much scientific research has been going on, and annual data is being maintained. And efforts by almost every country are being made to reduce the breaking down of ozone molecules. Analyze that word breaking down. Many chemicals, namely chlorine and bromine, are banned, which are thought to cause the depletion. Analyze use of chlorine and bromine. Bromine. आपका लैब में रहेगा एकदम पिंक कलर का लिक्विड पीने जैसा दिखेगा वो ब्रोमीन है. क्लोरीन किस में यूज होता है? हाँ क्लीनिंग एजेंट है क्लोरीन. ये दोनों का एक्सेसिव यूज होगा तो भी ये चांसेस है. करिए. Are banned, which are thought to cause the depletion of the ozone layer. Chlorofluorocarbons, CFCs, are regarded as the reason for the ozone hole. Only understand the word CFCs नहीं CFCs. You mostly CFCs. Ah. Go ahead. CFC gases are used in refrigerators, aircraft, and air conditioners. CFC compounds escape into the atmosphere and finally break down in the stratosphere. They produce fluorine atoms which destroy the ozone layer. Volcanoes play a role in ozone depletion. Okay. Large eruptions give out sulfur dioxide, which speeds up the destruction. First write what is ozone layer. मैं देता हूँ. और उसको आप लोग डायरेक्टली लिख सकते. What is ozone layer? It's mainly found between the stratosphere and between the stratosphere with a total height of 20 to 50 kilometers. With a total height of 20 to 50 kilometers. Full stop. It mainly absorbs ultraviolet radiation of the sun. Now look at his handwriting. ये क्या है? Ozone इतना beautiful है. Huh? Now if you write like this, then I'm not going to allow you. I'll make you write 10 times here. Sitting. These two guys will go after it. क्या? He cannot concentrate on writing. He is very lazy fellow. That is also. ये क्या है? ये काम करता है. Deepavali bonus के लिए special. So whatever you have written in the pencil, I will not mind up till here. It's okay. Good answer. You didn't bring the pen ना? यहाँ से लेके जितना भी नोट्स आज होगा तुझे पूरा पेंसिल लिख के दोबारा लेकर आना. जो laziness will be removed like this. He's writing. Look at his heading. ozone layer कैसा लिखा है and how these guys are writing. Am I bombarding with this chapter? चलो 2 घंटा मिला 4 चैप्टर खत्म करेंगे ऐसे किया है. Why then you are behaving like this? Don't want to write? No. Then you write means what? How do you write? I go with your words only. You write. How do you write? Show to your friends. Right. I'm taking care of my students. You should take care of the studies. If you do like this, then it is waste of giving you any, you know. So, where did I leave? It mainly absorbs. The UV rays of the sun. Yes. It was first found by or detected through. It was first detected through the NASA's
Satellite imagery. Satellite imagery. Full stop. Next para, cause for depletion. Causes for depletion. Causes for depletion. Point number 1. Use of chlorine and bromine chemicals. Use of chlorine and bromine chemicals. Next, use of C, capital letter CFC apostrophe S one. Use of CFCs as coolant in refrigerators, aircraft, and air conditioners. Refrigerator, aircraft, and air conditioners. Next, Refrigerators. aircraft and air conditioners. AC temperature. Chlorine atoms. Chlorine atoms. अभी याद है वरना मैं जैसा नहीं टूटता ना बस ऐसे ही लिखते जाते हैं. On certain days you will become flat, very high. You will call your dad. Your dad told me in the meeting. I remember. What did I say? Use of chlorine atoms also responsible for its destruction. Use of chlorine atoms in the also responsible for its destruction. Okay, now literally I'll give you a final point. I can see him crying like this.
ठीक है, I was showing some nice videos. Tell me, कौन सा videos चाहिए? वही बताओ ना जो अभी आप प्ले कर रहे प्ले थे कौन सा? वो अमेरिका
नहीं सकता एक दो क्वेश्चन चूज करेंगे causes का कितना पॉइंट देखा हम लोगों ने तीन राइट ठीक then you write global warming the last topic is impact of steady increase in global warming steady increase in mean temperature of the earth's surface steady increase in mean temperature of the earth is known as global warming. So the earth is known as global warming. Full stop. The foremost reason, its foremost reason, enhanced concentration of greenhouse gases, global warming, enhanced concentration of which gases? Greenhouse gases. Now, if I want to explain a while, what is this global warming as compared to what ozone layer? That is one layer which is getting depleted due to CFCs. We see not only in India, not only in Asia, not only in Europe, or not only in America. Throughout the world, there is a steady increase in the mean temperature of the earth. What is mean? Every year, the temperature average is going by 1 degree Celsius. An example. If it steadily rises for 10 years, how much degree it will be? 10 degree, which is very, very dangerous for a planet Earth. So the first greenhouse gas is the carbon dioxide that everybody knows. I showed you that sun's radiation, sun's incident rate and the radiation. If there is any unequal between these two, then the trouble starts. अभी क्या हो रहा है? More than 60% of the earth is absorbing the heat, and only less than 40% is going. अगर 50% जाएगा, जितना absorb किया 50% reflect कर दिया, then it is no problem. So that is why the entire world or entire globe is getting heated up, and that problem is called as the biggest drawback or the biggest danger. If the polar ice cap starts melting already, which is in the melting process, the water level in the earth continent will increase. Once it will increase, it can really take over the entire earth and submerge all the continents by water. And it is no solution and no chance of coming out. Okay? So, then you write causes. Point number 1. Rapid destruction of ozone layer. Rapid destruction of ozone layer. Rapid destruction of ozone layer. Second point. Heavy influence of greenhouse effects in the atmosphere. Am I going fast with the dictation? No. Heavy influence of greenhouse impact in the atmosphere. Next. Large scale deforestation. Large scale deforestation leading to overall increase in the carbon dioxide level. Next. 4 point. Fourth point. Increase in
level of pollution. Especially due to industrialization and urbanization. Especially due to industrialization and urbanization. Just read all these causes. We have it in the textbook from page number 103 to 104. It is there in the textbook. I have just given the heading. Just read it. I'll explain one by one. Causes now. Silently read it. Right. ನಿಮಗೆ ಸಣ್ಣ Read it very slowly and let me know. Standard, I could have given them one pick. Please. Yeah. You pack up. Ice creams are melting down. ये कौन सा कार्टून है? और ये है सब. हाँ, वो लड़की उसको पसंद है ना वैसा. ये कुछ अच्छा वीडियो देखना. इधर है. बाइनॉक्स. ये थोड़ा अच्छा है. आराम से करना. And not in this.
You guys are getting distracted by the 10th standard. Chalo, chalo, move. No 2 minutes. No.